Welcome to SRBPS online classes. I am Shruti Gupta and we are discussing next topic of fraction chapter, comparison of fractions. How to compare one or more than one factor, two or more than two fractions. Comparison means to see which one is bigger and which one is smaller. So first topic here is fraction with same denominator. How to compare fractions which have same denominator means which are like fractions. So, but students, these are like fractions because they have same denominator 8 and 8. So, how to compare them? It's very easy. Whenever your denominator is same, you just look at the numerators. You have to look only the numerator. Whichever number in the numerator is smaller, that full fraction is smaller. Whichever number is bigger than that, that is second number of fraction. And whichever numerator is biggest, that fraction is the greatest. So, right? So, if I want to write the ascending order of these fractions, I will simply go with the numerator. The ascending order means smaller to bigger. So, the fraction with smaller numerator will come first, then bigger numerator, and then bigger, and then biggest, largest, greatest, whatever. So, we can arrange like this, simple. We will just look at the numerator, smaller is smaller, greater, greater, greatest, right? And when I have to write descending order, so I will write the greater first, bigger first, then smaller than that, then smaller than that, and the smallest. This is simple. The fraction with same denominator, we have to change nothing. Simple answer. Second topic is fraction with same numerators. What if now denominator? Every time in like fraction we have same denominator, not the numerator. कभी भी हमने नहीं देखा कि हमारा न्यूमरेटर सेम होता हो. But what if numerators are same? It's a bit confusing, but don't get confused. If numerators are same, then our answer will be opposite. जो हम आंसर लिखते हैं उसका उल्टा आंसर हो जाता है. Because these are not called like fractions. Like fractions are only the ones with same denominator, not numerator. Here denominators are different, so these are called unlike fractions only. But they have same numerator. So we have one trick. We will just opposite the answer. मतलब ascending में descending लिख देंगे, descending में ascending लिख देंगे. So answer is opposite means now I will check the denominators. The fraction with the largest denominator is the smallest one, and fraction with the smallest denominator is the largest one. तो अगर मुझे ascending order लिखना है, ascending is smallest to bigger, लेकिन अब मैं इसमें उल्टा कर दूंगी, bigger to smaller लिख दूंगी. So which one is bigger? 2 by 9 is bigger, then 2 by 7, then 2 by 4, and then 2 by 3. Then comes descending. अब descending में होता है bigger to smaller. अब मैं उल्टा कर दूंगी, smaller to bigger. So which is the smaller? 2 by 3, then 2 by 4, then 2 by 7, then 2 by 9. So simple is denominator में same रहता है answer, but in numerator the answer becomes opposite. As in ascending we write descending order, in descending we write ascending order. Simple trick. Third is fraction with different numerators and different denominator. In these fractions ना तो numerator same है ना ही denominator. So what we are going to do in this? We have two fractions here, 2 by 3 and 5 by 7. So whenever I have to check this, I will do cross multiply. Cross multiply means with this numerator I will multiply the denominator of other, and when with this numerator I will multiply the denominator of first one. See, I have done for you here. 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे and 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 7s are 14, 5 3s are 15. अभी मुझे कैसे पता लगेगा कि which one is bigger? I will see. 14 जो आंसर्स आए हैं, in 14 and 15 which one is bigger? 15 is bigger. So 15 किसका आंसर आ रहा था? 5 multiplied by 3. अब मैं 5 वाले को बड़ा मानूंगा 3 वाले को. I will not check denominators in this. I will check numerator. जिसका numerator बड़ा आ रहा है, 3 तो denominator था, 5 numerator है ना, जिसका ऊपर वाला नंबर बड़ा आया है वही fraction बड़ी हो जाएगी. For example, in 2 7s are 14 and 5 3s are 15. अगर ये नंबर बड़ा होता तो 2 वाली fraction बड़ी होती. But because this is bigger और इसमें 5 आया है, which is the numerator. So that's why 15 is bigger, and that's why 5 by 7 fraction is bigger than 2 by 3. So it's easy to compare the fraction with two fraction numbers only. अगर हमारे पास सिर्फ दो ही fraction है, very easy, I will simply cross multiply and find the answer. What if I have three fractions with me?
व्हेन आई हैव टू कंपेयर 1/3, 3/4, 4/6, दो फ्रैक्शंस थी तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इजीली कर दिया था, बट अगर 3 फ्रैक्शंस होंगी तो कैसे करेंगे? द आंसर इज कंप्लीटली डिफरेंट इन 3 फ्रैक्शंस. व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू फाइंड, क्योंकि अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, इन तीनों फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा. आई हैव टू मेक देम लाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शन मीन्स सेम डिनोमिनेटर. व्हाट इज लाइक फ्रैक्शन? बिना लाइक फ्रैक्शन के मैं 3 फ्रैक्शंस को कंपेयर नहीं कर पाऊंगी. 2 को मैं कर सकती हूँ बट 3 को नहीं. सो आई विल मेक देम लाइक फ्रैक्शन. एंड फॉर मेकिंग देम लाइक फ्रैक्शन आई विल डू, लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम, तो मैं अब इन तीनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम बनाऊंगी. एंड फॉर मेकिंग द डिनोमिनेटर सेम आई हैव टू फाइंड द एलसीएम. एलसीएम यू हैव रेड इन प्रीवियस चैप्टर्स. लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मुझे निकालना पड़ेगा तीनों डिनोमिनेटर्स का. सो व्हाट आर द 3 डिनोमिनेटर? 3, 4 and 6. So I'll find the LCM. So let's check how to find the LCM. First, I will start with the smaller number. The smallest number we have is 1 से नहीं करते मल्टीप्लाई, 2. Let's check 2 की टेबल में 3, 4 या 6 में से कोई नंबर आ रहा है. In 2 table 3 doesn't come. So 3 we will write same to same. In 2 table we have to check 4. क्या 2 की टेबल में 4 आता है? Yes. 2s are. So 2 2s are 4. Now in 2 table 6 comes. Yes, at third place. 2 3s are. So this is how I have to do. I have to always multiply with the smaller table. मैं सीधा 6 से नहीं कर सकती. No, that will be completely wrong. I have to start from the smaller table only. Again 3 2 3. क्योंकि 2 है, so I have to divide with 2 only. In 2 table where does 2 come? First place. Then 3. अभी क्या बचा? 3 1 3. Again I will go. Now this will not come in 2 table. I will go with 3 table now. 3 1s are 3, 3 1s are 3. This is already 1 and 3 1s are 3. The purpose is to make all the 3 denominators 1 1 1. तीनों denominators को जब मैं 1 1 1 बना लूंगी, then I can easily find my LCM. Whatever 3 numbers have come here, I have to simply multiply them. 2 2s are 4, 4 3s are 12. So my LCM of these 3 numbers is 12. LCM क्यों लिया? ताकि मैं इन तीनों डिनोमिनेटर को सेम बना सकूं, ताकि मेरी लाइक फ्रैक्शन आ जाए. अब सेम कौन सा नंबर बनाऊंगी? जो LCM आया है, क्योंकि LCM इज द नंबर जो इन तीनों टेबल्स में आता है. सबसे पहले 3 की टेबल में 12 भी आता है, 4 में भी 12 आता है, 6 में भी 12 आता है. देयर इज नो अदर नंबर जो इन तीनों टेबल में एक साथ आता हो. ठीक है, सबसे पहले तो सो 12 इज द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल. सो नाउ अब मैं इन तीनों नंबर्स के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, दीज 3 फ्रैक्शंस आई विल मेक द डिनोमिनेटर 12, क्योंकि मुझे लाइक फ्रैक्शन बनानी है और लाइक में डिनोमिनेटर सेम होते हैं. सो व्हाट इज द डिनोमिनेटर है बच्चे? सॉरी, एलसीएम हियर 12. सो आई विल मेक दीज 3 डिनोमिनेटर्स 12. देन माय आंसर विल बी इजीएस्ट. 3 को भी 12 बना देंगे, 4 को भी 12 बना देंगे, 6 को भी. बट कैसे बनाएंगे? आई हैव टू चेक 3 की टेबल में 12 कौन से प्लेस पे आता है. इन 3 टेबल 12 comes at 4th place. 3 4s are 12. And in 4 table 12 comes at 3rd place. And in 6 table 12 comes at 2nd place. तो जिसके प्लेस पे आता है उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे. In 3 table 12 comes at 4th place. In 4 table 12 comes at 3rd place. In 6 table 12 comes at 2nd place. So with whichever number I have multiplied downside, अब मुझे ऊपर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. I have told you in equivalent fraction. In fraction chapter, upside and downside we have to multiply and divide always with the same number. तो अगर मैंने नीचे 4 से किया तो ऊपर भी 4 से करूंगी. 1 4s are 4. Here 4 3s are 12. नीचे 3 से किया तो ऊपर भी 3 से करूंगी. 3 3s are 9. Downside 6 2s are 12. अगर नीचे 2 से किया तो ऊपर भी 2 से करेंगे. 4 2s are 8. Now we have 3 new numbers here. 3 new fractions here. कौन कौन सी? 4/12, 9/12 and 8/12. See, can you see the denominators have become same? These are now like fraction. Now I can easily compare them. If I want to write them in ascending order, fraction with same denominator. Now I have to write the answer of this one part. Fraction with same denominator. So I write in ascending smaller to bigger. So this one is smaller. 4/12, then 8/12, and then 9/12. So this is the ascending order of this. और अगर मुझे एक्चुअल आंसर्स लिखने हैं
तो 4/12 किससे आया था? 1/3 से. 8/12 has come from 4/6 and 9/12 have come from 3/4. So these are the three actual answers of these fractions which I have made. So हमें यही 3 numbers fractions compare करनी थी. So I have written the actual answer also. Only thing you have to keep in mind is whenever both the thing numerator and denominator are different, you have to find the LCM of 3 denominators. LCM के बाद you make denominators of all 3 fractions that LCM. देखो मैंने 3 का भी 12 बना दिया, 4 का भी and 6 का भी. If you will write like this, it will be easier for you to find. Please do practice of this. Lots and lots of practice is required, and then you will understand nicely. That's all from my side, students. Thank you.